हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी आप लोगों को अपडेट भेजा जा रहा है आप उसको वर्क कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री और भी जो कुछ भी अपडेट आपको मिल रहा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, वी completed our first chapter, chemical reactions and chemical equations. Now you have to read whole chapter thoroughly and sort out the questions given in the book. जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, दिनेश, एस चांद, NCERT, whatever. Okay. Otherwise, some study material is also provided to you during the lectures. You have to watch all video lectures carefully, then prepare the chapter thoroughly. मैंने तो आपको ये बताना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब आपका एक टेस्ट लूँ, test just based on your CBSE pattern. So this is the announcement for you. You have to prepare first chapter thoroughly of your science part, chemistry. That is the chemical reactions and equations. I'll give you a test in the coming Tuesday. Okay. So you have to prepare. अगर कोई आपको डाउट आते हैं during the study between 2-3 days of the preparation of the chapter, you can ask me. Okay? आप क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। रिलेटेड टॉपिक और क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई एक्टिविटी समझनी है, रिएक्शन समझनी है, ठीक है, we will discuss on. Now I am going to start second chapter of your syllabus in the chemistry part. Second chapter is acids, bases and salts. It is another very important chapter. बेटा आप सभी जानते हो acids, bases and salts, these are the substances. So we can say normally available substances, जितने भी substances available हैं, ठीक है, generally can be classified in three parts. One is acid, on the basis of behavior, properties of the substances, chemical nature of the substances, their chemical and physical behavior of the substances can be classified as acids, bases and salts. These are main three classifications, and these three classifications may involve, देखो substances कोई भी हो, there are mainly two sources of substances. Either substances are obtained from the organic sources, that is living sources. What are these living sources? That is by animals or plants, ठीक है, or from inorganic, organic compounds you can say. ऐसे एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स जो लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर स्टडी होंगे, और जो बेटा मिनरल्स से मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट से मिलेंगे, मिनरल्स और ओर्स, अर्थ क्रस्ट, और फ्रॉम अदर नॉन लिविंग सोर्सेस जैसे माइंस हो गए, ठीक है। कहने का मतलब है जो एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। सब्सटेंसेस को तीन तरीक़ा से कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर डिस्टिंग्विशिंग, and on the basis of the characteristics of the compounds. Clear? Now the main question is this,
कि व्हाट आर एसिड्स व्हाट आर बेस। देखो अगर मैं जस्ट एसिड बेस और सॉल्ट्स की डेफिनेशन बता दूं और मैं कह दूं द चैप्टर इज नाउ ओवर, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। इट इज़ वेरी डेप्थ इन, you have to study each and every topic in detail. It's a very very useful base for the future competitions, for IIT-JEE, for NEET, for KVPI, for NTSE, even in Olympiads. ठीक है, एसिड्स बेस और सॉल्ट्स के बेसिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो राइट, एसिड्स फर्स्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स सी एसिड्स। बेटा ये जो एसिड वर्ड है इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस से बना है एसिड्स। इट मीन्स सोर इन टेस्ट। दिस इज द लैटिन वर्ड। सो यू कैन से सिंपल डेफिनेशन जो हम जनरल कह सकते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, दीज आर दोज सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स, मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, which are sour in taste, जो खाने में चखने में खट्टे होते हैं। However, remember, if you are in the laboratory, then never try to taste any chemical. It would be very dangerous. Okay? From the word acidus, the term sour is coming out. So we can define acids are those substances which are sour in taste. Some daily use examples are there. Lemon juice, tomato, vinegar. All these are sour in taste, so all these contain acids. और आप ध्यान से देखो, all these are obtained from the living sources, plants. So all these are organic acids. Okay. Some other compounds like HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, oxalic acid. There are so many other examples. यहाँ पे आप कर्ड भी लिख सकते हो, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर, first three are the inorganic acids. This is the hydrochloric acid, this is the sulfuric acid, this is the nitric acid, this is the carbonic acid, and this is the oxalic acid. Carbon and hydrogen, oxygen containing compounds generally belongs to the organic compounds. Okay. So we can simply just understand what are the acids. These are those which are sour in taste. And these are some examples. Now, just first of all, we are going to understand the wording. What are bases? Basic meaning, basis की क्या है? These are those substances which are these are those substances which are bitter in taste. मैं टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप कभी लेबोरेटरी में जाओ, never try to distinguish the given solution or compounds acidic, basic or salts by testing. Testing is very very harmful or injurious to the health. Maybe
वेरी हार्मफुल इन द लैबोरेटरी, एक्सप्लोजन हो सकता है. बिटर इन टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल washing soda. Do you know washing soda? Na2CO3 dot NS2. Baking soda, used as a very good antacids. जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो बेकिंग सोडा लेना चाहिए. इट्स अ बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट सम वाटर. Magnesium hydroxide, aluminum hydroxides, these are some base. और ये सभी टेस्ट में स्कोर होते हैं, इकट्ठे होते हैं. So the basic first definition, first perception about the bases are these are bitter in taste, acids are sour in taste. Some examples are there. Now this is the introduction of acid, base and salts. There are so many other definitions and other examples we will discuss in detail. But what are salts? I am going to discuss what are the salts. These are the compounds generally formed by the acids and bases. ठीक है, मैं न्यूट्रल नहीं कहना चाहता. It depends upon the relative strength of acid and base. But salts generally वो compounds हैं जो acid और base से मिलके बनते हैं. या फिर आप इनको हाइड्रोलाइज करो, when you dissolve them in water, then you get acid and base both. For example, like NaCl, Na2SO4, CaCO3, NaNO3, MgCl2, these are some salts. अब देखिए जरा इन सॉल्ट्स में एसिड और बेस है या नहीं है. Suppose we have NaCl. Then remember, NaCl is formed by the reaction with HCl and NaOH. HCl is the acid and NaOH is the base. जब ये आपस में react करेंगे, then we get salt and water. If we take acid HCl and base calcium hydroxide, it's a select line. After the reaction, you get CaCl2 plus 2S2. Suppose you have acid H2SO4 and base CaOH whole twice. Generally base वो होते हैं जिनमें OH होता है, acids वो होते हैं जिनमें H होता है. बट ये एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, अभी मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. It's an introduction about acid, base and salts. When these two react together, acid and base combine together, we get CaSO4 and water. So there are so many examples by which you can say salts are the compounds which are generally formed by acids and bases. Acids और base के combination से salts मिलते हैं. Now, what are the other definitions of acid and base? What are the characteristics of acids and base? How can you distinguish acids and base without taste? That means we have to need some indicators known as acid-base indicators. और यहाँ पे बेटा कुछ natural indicators हैं like litmus paper और कुछ synthetic indicators हैं like phenolphthalein, methyl orange. These are the chemical or synthetic indicators. कुछ indicators ऐसे भी हैं जो किसी भी कंपाउंड की स्मेल के थ्रू बता देते हैं कि एसिड और बेस है. ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स. हालांकि अब आज की डेट में हम स्टडी करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. सो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश विदाउट टेस्ट द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस? वी हैव टू स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स and what are the characteristics of acids, base and salts.
mainly their chemical reactions, chemical properties, and there are some other definitions. Not only acids are what these are the sour in taste, but there are so many other definitions given by different scientists. So we will discuss all this in the next video. तब तक आप अपनी बुक के फर्स्ट 3-4 पेजेस, स्पेशली 2 और 3 पेजेस मेनली रीड कर लो एंड वीडियो वॉच कर लो. ओके, मिलते हैं. तब तक पढ़िए और पूरे मन लगा के पढ़िए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा. अच्छा, जो पहले हो चुका है मुझे उसका टेस्ट लेना है, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ओके, थैंक यू. कीप स्माइलिंग एंड बी